नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ब्रिटेन गई हुई हैं। वहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और इसी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनी है आतिशी। कैम्ब्रिज और इंडिया की ये कॉन्फ्रेंस जो है, इसका टॉपिक था एजुकेशन बिल्डिंग इंडियाज फ्यूचर एट 100 और इसी मुद्दे पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने अपना पक्ष रखा। लेकिन इस दौरान उन्होंने न सिर्फ दिल्ली के बारे में बात की, दिल्ली की केजरीवाल सरकार किस तरीके से दिल्ली में कामकाज कर रही है इस पर बात की, बल्कि उन्होंने साथ ही साथ भारत की मौजूदा स्थिति को लेकर भी अपना बयान दिया। और वहां पर आतिशी ने मौजूदा स्थिति को लेकर सरकार की आलोचना की। ये तक कह दिया कि बहुत बातें होती हैं कि भारत की जो इकॉनमी है वो 3.5 ट्रिलियन की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम जब पढ़ते थे तब ये कहा जाता था कि 2020 तक भारत डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, लेकिन 2020 भी आकर चला गया। भारत में 35 करोड़ जो लोग हैं वो भूखे सोते हैं और तमाम बातें उनके द्वारा कही गई। और इन्हीं बातों को लेकर भारत में बवाल मच गया और आरोप ये लगा है आतिशी पर कि उन्होंने देशद्रोह किया है, भारत का अपमान विदेश में जाकर किया है। पहले आतिशी ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। Thank you to the entire team at Judge Business School for organizing this conference and for inviting me. And yes, as Marvin said, it's been will I, won't I, will I, won't I. No thanks to me, I had confirmed. But we have a special relationship with the government at the center. So today we are talking about India at 100. We stand at India at 75. And this, I think, is a great moment for the country as a whole, and especially for young people who are mostly sitting in the audience here to think about this question. Because primarily the onus of building India at 100, building India at 2047 lies with many of you. And I think that this is a time to think about where we have come so far, why we have come where we have come, and how really we can change things if we want to move forward as far as the country is concerned. I remember when I was in school, which is now many, many years back. And I remember that when we were in school, in social science, economics had been introduced just in those years. Before that, we used to have history, geography, and civics. And I think around the time when I was in school, which is now around 25 years ago, that economics was also introduced as a subject in the social science textbook. And I remember I think it was probably the opening chapter of the economics textbook in class 9 that talked about countries being divided into 3 categories. There are countries whose economy is developed, there are countries whose economy is developing, and there are countries whose economies are underdeveloped. And India was placed in number 2 category. India was a developing country. It was on the way to being developed. And when I was in school in grade 9, my textbook, if I remember correctly, or if not my textbook, definitely the narrative of the time said that India will definitely be a developed country by 2020. Now 2020 has come and 2020 has gone. And while we are given a lot of media narratives about how India is growing, sometimes it's shining, sometimes it's $1 trillion economy. And we are often told that India's GDP has now crossed the $3.5 trillion mark. We are told that India is the fastest growing G20 economy and many other such pieces of information. But the reality, frankly, is far more worrying and underwhelming than that. And I think that a better indicator, which really tells you about the state of the country, is the Human Development Index. Now, what is the Human Development Index? It is this index that the UNDP, the United Nations Development Program, comes out with, I think, every year or every other year, that looks at education, healthcare, employment, malnourishment, the opportunities that women have in any country or any society. And it develops an indicator on which 191 countries, I think, participate. India ranks 132 out of 191. This is India at 75. And I think that a lot of countries, which we regard, especially our neighbors, in comparison to whom we consider ourselves far more developed and far more economically ahead of, are much ahead of us are in these indicators. This includes Bhutan, this includes Sri Lanka, this even includes Bangladesh, which has a higher ranking on the Human Development Index than India does. We are told that India has the largest number of
billionaires, growing billionaires. And the number of billionaires grew from 102 to 166 between 2020 and 2022. But there's another figure also that grew from 2020 to 2022, and that is the number of hungry people in the country, those who do not have enough food. And that number in the same period, when the number of billionaires was going up, went from 19 crores to 35 crores. India, if I may tell you, is the second largest producer of food in the world. And yet, it is the country where the largest number of people are malnourished, undernourished, and do not have enough food. तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की इस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने भारत की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की और ये कहा कि भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132वें पायदान पर है। भारत अपने नेबरिंग कंट्रीज जिसमें भूटान और श्रीलंका है उससे भी भारत की जो स्थिति है वो खराब है। और इन तमाम बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आतिशी पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया कि आतिशी ने देशद्रोह किया है, उन्होंने भारत का अपमान किया है और तमाम आरोप उन पर लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनका स्टेटमेंट सुनिए। मार लेना का बयान शर्मनाक है, उनको डूब के मर जाना चाहिए शर्म से। जिस देश का नमक खाते हैं उस देश के बारे में बाहर जाके गलत टिप्पणी करना, झूठे आंकड़े पेश करना, ये देशद्रोह का मामला बनता है। इनको शर्म नहीं आती। वहां ये बकवास कर रहे हैं कि 35 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। इनको कोविड से दिखाई नहीं दे रहा कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। जिस दिल्ली में ये मंत्री हैं उस दिल्ली में 72 लाख लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। लेकिन देश का विरोध, मतलब पार्टी का विरोध करते करते ये कब देश का विरोध करने लगते हैं, इस बात का इनको एहसास ही नहीं है। इस तरह के बयान देना, देश के खिलाफ बोलना, इनकी क्या विचारधारा है, क्या संस्कृति है इनकी, शर्म आनी चाहिए। तो कैम्ब्रिज में आतिशी के दिए बयानों पर बीजेपी आग बबूला है और बीजेपी आतिशी के बयानों की कड़ी निंदा कर रही है और साथ ही साथ मोर्चा बीजेपी की तमाम नेताओं की ओर से आतिशी को लेकर, अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर खोल दिया गया है कि विदेश में जाकर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने भारत का अपमान किया है। अब देखना होगा कि बीजेपी के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी क्या जवाब देती है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।